हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, उसका सब टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है फूड प्रिजर्वेशन। इसके लेसन को हम कैसे प्लान करेंगे। सो वील स्टार्ट बाय फिलिंग ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, डेट, नेम ऑफ द स्कूल, पीपल टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड, एक पार्टीशन और राइट साइड में सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन। इसे हम इंफॉर्मेटिव आइटम या अपर फॉर्मेट भी कहते हैं। आफ्टर दैट, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये हमेशा सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, आपको पता है, प्रेजेंट टेंस में, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। ये आपको 5 लिखने हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, तो ये हर सब्जेक्ट का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। ये आपको मिनिमम 5 लिखने होते हैं। सो आप लिखोगे टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, to develop logical and decision-taking power in students, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students. Next है specific objectives। ये कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है, साथ ही साथ हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। इसमें हम एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं। ये आपको पता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो कैप डोमेन है वो इसमें फुलफ़िल होने चाहिए। आप इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स लोगे, ये भी आपको मिनिमम 5 लिखने हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स मेथड्स। Students will be able to recall concept of food poisoning caused by harmful microorganism. Students will be able to explain various methods of food preservation. Students will be able to identify various types of preservatives. Students will be able to illustrate how we can protect various types of food from the attack of microbes. After that, teaching aids, ये दो होते हैं, general teaching aids and specific teaching aids or material. In general teaching material, you will write chalk, duster, blackboard, etc. Whereas in specific teaching material, आप लिखोगे chart, model, pointer, etc. Next, teaching methods, जिसमें सबसे एप्ट मेथड माना गया है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। आफ्टर दैट यू विल राइट टीचिंग मैगजिम्स, ये आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। देन प्रीवियस नॉलेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बेसिस पे आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जज करते हो। इसके साथ ही आप बच्चों को जो टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले हो, आप उसे इंट्रोड्यूस करते हो। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चंस करोगे, जिसके लिए आप 3 टेबल बनाओगे, सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप बच्चों से जो क्वेश्चन करोगे वो येस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स में नहीं कर सकते। ओके, सो विल स्टार्ट। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? They'll answer mango, apple, banana, orange. Next question, name some dishes made from mangoes. They'll answer mango pickle, mango shake, mango pie, etc. Next, how mango pickle does not get spoiled even after long time. So यहाँ पे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स, तो आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आप अपना जो भी टॉपिक है आप उसे अनाउंस करोगे क्लास में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड प्रिजर्वेशन, देयर वेरियस मेथड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप 4 टेबल्स बनाओगे, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखे थे, आप उन्हें यहाँ लिखोगे। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आप एक्सप्लेन करोगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में आप उनकी एक्टिविटी को लिखोगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आप अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले हो या ड्रॉ करने वाले हो, आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। सो विल स्टार्ट फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस. Unhealthy or spoiled food is the major cause of disease in humans and known as food poisoning. To prevent this, the food needs to be preserved in variety of ways. Food preservation is one of the methods to protect food from unwanted microbial growth. After the food is produced, we store
and protect by covering the rice with lid to keep away flies and other insects. By this, we are protecting it from any infection caused by them. This is a short term condition. Food preservation, on the other hand, is basically done to preserve the food for a longer time. In students' activity, you will write, student will listen carefully and write down the important items. In blackboard work, सबसे पहले आप जो पढ़ा रहे हो आप उसको लिखोगे food preservation and after that लिखा है food preservation is the technique to prevent food spoilage, food poisoning and microbial contamination in food. Next teaching point, chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals that are generally used to check the growth of microorganisms and are called as preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are some common preservatives. These are used in jams and squashes to check their spoilage. In students' activity, you will write student will listen carefully. And in blackboard work, you will write common preservatives are sodium benzoate and sodium metabisulfite. It is very important to ask questions in between your classes. So आप question करोगे what is the major cause of disease in humans? They'll answer unhealthy and spoiled food is the major cause of disease in humans. तो आप उन्हें appreciate करोगे. Very good. Next topic, preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Apart from that, salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. In students' activity, you will write student will listen carefully. Then you'll ask them what is added in pickles to prevent attack of microbes. They'll answer salt. फिर आप उन्हें appreciate करोगे. Next, preservation by sugar. Sugar is another commonly used preservatives used in jams and jellies. Sugar is a very good moisture absorbent. By reducing the moisture content, it restrains the microbial growth. Students' activity, you will write students will listen carefully. Then आप question करोगे what is generally used to preserve meat and fishes? They'll answer common salt. आप उन्हें appreciate करोगे good. Next, preservation by oil and vinegar. By using oil and vinegar, we can prevent spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Many vegetables, fruits, fishes, and meats are often preserved by this method. In students' activity, you will write student will listen and note down the important terms. Next, heat and cold treatments. Students, you must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. Boiling and refrigeration prevent around 70% of microbial growth. Boiling kills the microorganisms that cannot tolerate extreme temperatures, thus, it helps in food preservation. Refrigerators have very low temperatures since microbes do not get optimum temperature that they need for growth, their growth is inhibited. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents growth of microbes. This process is called as pasteurization and was discovered by Louis Pasteur. In students' activity, you will write, students will listen carefully. प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद आप रिकैपिचुलेशन लिखोगे जिसमें आप एक पूरा ओवरव्यू दोगे आपने जो भी क्लास में बच्चों को पढ़ाया है या आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर सकते हो या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में दोनों सही है. So, here you will write food preservation is one of the methods or technique used to prevent or protect food from unwanted microbial growth. It is basically done to preserve the food for a longer time. Next, by using chemical preservatives such as sodium benzoate and sodium metabisulfite, one can prevent the attack of microorganisms. Common salt is also used to preserve meat and fishes. Sugar is very good moisture absorbent and by reducing the moisture content, it restrains microbial growth. Boiling and refrigeration also prevents the microbial growth since microbes do not get optimum temperature they need for growth. Pasteurization was discovered by Louis Pasteur. Next, evaluation, क्योंकि it is very important
for a teacher to evaluate his or her student, ताकि समझ आ सके कि आपने बच्चों को क्लास में जो भी पढ़ाया है वो उन्हें कितनी हद तक समझ में आया है। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। सो विल आस्क व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, हाउ डू वी प्रिजर्व फूड एट होम। नेक्स्ट, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, name two chemical preservatives. After that, who discovered pasteurization? नेक्स्ट, होमवर्क जिसमें एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। आप बढ़ा भी सकते हो बट मैंने यहाँ पे 2 दिया है। फर्स्ट, fill in the blanks. The method to protect food from unwanted microbial growth is called dash. B. Dash is a good moisture absorbent. And question number 2, why pasteurized milk can be consumed without boiling? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।